हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आज हम बायोलॉजी चैप्टर होमोस्टेसिस के एमसीक्यूज पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो की तरह दूसरे वीडियो के खिलाफ ये वीडियो 15 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। एमसीक्यूज दिया गया है, प्रोटोनिफ्रेडिया आर प्रेजेंट इन। प्रोटोनिफ्रेडिया आर प्रेजेंट इन, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लैटवर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रोस्ट्रोम इन अर्थवर्म ओपन्स इन नंबर ए एक्सटर्नल स्पेस, नंबर 2 इंटरनल बॉडी कैविटी, नंबर 3 इन गट, नंबर 4 इन ब्लडर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल बॉडी कैविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following excretory structure is associated with gut of the organism? Which of the following excretory structure is associated with gut of an organism? Protonephridium, metanephridium, malphibian tubules, nephrons। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मेटानेफ्रेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, malphibian tubules absorb waste material and salt from blood, lymph, gut, hemolymph। तो malphibian tubules absorb waste material and salt from hemolymph, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a segmentally arranged excretory system? Which of the following is a segmentally arranged excretory system? Metanephridium, protonephridium, metanephridium, malphibian tubules एंड निफ्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरिन साइकिल अमोनिया molecule combine with one carbon dioxide molecule to form one molecule of urea. In urine cycle, ammonia molecule combine with one carbon dioxide molecule to form one molecule of urea, A 1 2 3 4। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, excessive lactic acid is converted into by liver, glucose, fructose, sucrose, glycogen। excessive lactic acid is converted into glycogen by liver। तो इसका राइट ऑप्शन है ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, each human kidney receives of the total cardiac output 10%, 20%, 30%, 40%. Each human kidney received of the total cardiac output। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following nephron play important role in the production of concentrated urine? Which of the following nephrons play important role in the production of concentrated urine? Cortical, medullary,
जस्टोमेडोलरी, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जस्टोमेडोलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the vascular channel are related to juxtamedullary nephron only? Efferent arteriole, pretubular capillaries, vena nervosa, vena recta। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following filtrate contain excessive amount of amino acid, glucose and salt? Which of the following filtrate contain excessive amount of amino acid, glucose and salt? Glomerular filtrate, filtrate passing through ascending limbs, filtrate passing to distal convoluted tubule, a filtrate passing through collecting tubules। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following constituent is or maximum in the filtrate that leaves proximal convoluted tubules? Which of the following constituent is or maximum in the filtrate that leaves proximal convoluted tubules? Glucose, amino acid, nitrogenous waste, all of this। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजनियस वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, mammalian kidney under restricted water supply can conserve water by over reabsorption of glomerular filtrate. Mammalian kidney under restriction water supply can conserve water by over reabsorption of glomerular filtrate। ऑप्शन दिया गया है 80.50%, 90.50%, 95% and 99%, 99.50%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, on which of the following side the posterior pituitary hormone act predominantly? On which of the following side the posterior pituitary hormone act predominantly? तो ऑप्शन दिया गया है proximal convoluted tubule, descending limb of lobe of Henle, ascending limb of lobe of Henle, collecting tubules। तो इसका राइट ऑप्शन है डी, convoluted tubules। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, बट बिफोर this question I request you to subscribe my channel and like this video and watch all the video for the success in every examination. Which of the following kidney stone are most common? Which of the following kidney stone are most common? Calcium oxalate, calcium phosphate, uric acid,
ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट इज़ द मोस्ट कॉमन किडनी स्टोन। This was the last question of this video. So student, अगर आपको ये MCQs अच्छे लगे हो, ये वीडियो अच्छे लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जब हमारे चैनल की सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँच जाए तो हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे जिसमें अच्छे अच्छे टीचर होंगे और वो बिल्कुल मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको MCQs रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबसे यही उम्मीद है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि जल्द अज जल्द सब्सक्राइबर 1000 तक पहुँचे। इंशाल्लाह फिर हम मुकम्मल एक्सप्लेनेशन के साथ और अच्छे अच्छे टीचरों को प्रेजेंट करते हैं अपने चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।